अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज की जो वीडियो है जी वो है जी इमर्जिंग इंडिया द राइज एज अ सुपर पावर। तो देखते हैं कि भाई इसमें क्या सुपर पावर दिखाई है इंडिया ने। तो लेट्स गेट स्टार्ट। India, the world's fastest growing major economy, expected to be the world's third largest economy by 2027, only behind USA and China. Currently, India is the fifth largest economy in the world, with a huge GDP of almost $4 trillion. And according to IMF, India is on the way to overtake Japan in the end of this year and will become the fourth largest economy in the world and second largest economy in Asia continent. India has already become the third largest economy in the world by PPP क्या GDP, बात है यार। with a massive economy of 14,600 trillion. This year, India is going to grow with the impressive growth rate of over 7%, which is much higher than all major economies. India is not only the fastest growing major economy in the world, but also the world's fastest growing stock market, the world's fastest growing real estate market, the world's fastest growing startups ecosystem, and home to the highest numbers of under construction mega projects in the world, spending over $1.9 trillion just on its infrastructure between 2018 to on the way 2025. India is improving its infrastructure rapidly, and due to the attractive business policies of the government of India, such as PLI scheme, big companies of the world are starting their production in India. The biggest example of this is Apple, which working on produce 25% of its smartphone production from India by the next year. India is the fourth most powerful military in the world and having the second largest active army in the world with 1.4 million active military personnel. And the country is one of the few countries in the world that has lethal nuclear weapons. Also, India is modernizing its military at a very fast pace by spending $80 billion on its military, which make India the world's fourth largest defense budget. India is not only paying attention to its infrastructure and military, but is also paying equal attention to technology. India is one of the 4 countries in the world that have developed anti-satellite weapons. That means India has capability to destroy the communication system of any countries in the world by destroying their satellites in the space. An Indian Space Research Organization has successfully launched over 435 foreign satellites for 36 different countries, including satellites of USA, Germany, France, UK, and Russia. India has become the first country in the world to reach Mars in its first attempt and become the first country in the world to successfully land a spacecraft on South Pole of the Moon. And did you know that India has created an incredible record by successfully launching 104 satellites by a single rocket? Last year, India has overtaken China and now become the most populous country in the world with the world's largest young force. More than 50% of its population below the age of 25 years. And this young force is starting their business, due to which India has become the world's largest and fastest growing startup ecosystem. Today, with over $900 billion industrial output, India is among the world's top 5 most industrialized countries. Big companies of the world and Indian companies are starting their production in India, due to which India is now becoming the manufacturing hub of the world. Last year, India had total exports of $776 billion. And the way the industrial growth is visible in India, by 2030, India's output is expected to be more than $3 trillion, and export is expected to be $2 trillion, which will make India the third largest exporting country in the world after China and USA. Due to this, India's impressive growth, the wealth of the people of India is increasing very fast. Today, with a wealth of $18 trillion, India has become the 4th wealthiest country in the world, and the way India's wealth is increasing, by 2030, India's wealth will cross $30 trillion, which will make India overtake Japan. We'll become the 3rd most wealthiest country in the world after USA and China. The way India's economy and wealth is growing, not only the people of India, but also the big companies of the world are investing in India's stock market, due to which today India's stock market is the fastest growing major stock market in the world.
In just last 1 year, India has overtaken France. UK and Hong Kong now become the world's fourth largest stock market with a market cap of more than $5.2 trillion. And according to IMF, the size of India's stock market will be more than 11 trillion by 2030. Then India will overtake Japan and become the third largest stock market in the world after USA and China. India, the world's fastest growing major economy, the world's fastest growing major stock market, the world's fastest growing real estate market, and the world's fastest growing startup ecosystem is expanding at an annual rate of 7%. Already the fifth largest economy, it will rank third by 2027 after USA and China. Will it become a superpower? Give your opinion in the comments. तो सो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि भाई यूएसए से अमेरिका से भाई ने एक वीडियो बनाई है इंडिया के बारे में कि भाई चाइना और जो भी जर्मनी जो दूसरे मुल्क है ना उनसे ज्यादा चौथे नंबर पर इंडिया आता है यार वाकई यार ये हक बनता है यार इस वीडियो में हमने जाना इंग्लिश में था थोड़ा बहुत हमें समझ आ रहा था कि जैसे वो इंडिया का नाम ले रहा था फोर ए कंट्री के नाम ले रहा था हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था दूसरी बात ये है कि भाई वाकई इंडिया बहुत ही तरक्की कर रहा है इसके जो ट्रेन विकट दिखाए गए हैं ट्रेन कमाल के हैं हम पहले भी एक दो वीडियो पर रिएक्शन कर चुके हैं ट्रेनों पर तो कमाल की यार इनकी जो ट्रेनें हैं ना वीआईपी वंदे मोहतरम होगी जो भी इनकी जो और दो तीन हैं वो भी कमाल की ट्रेनें हैं भाई मुझे तो आज इस वीडियो में देखकर बहुत ही खुशी हुई कि भाई इंडिया इतनी तरक्की पर इनकी इकोनॉमी भाई इकोनॉमी बहुत ही ऊपर जा रही है डॉलर के बारे में भी बात की गई सारा कुछ इसमें जाना यार मुझे बहुत ही खुशी होती है कि भाई जो भी है और दूसरी बात इनकी जो मिलिट्री के बारे में पुलिस के बारे में और आर्मी के बारे में सारी बातें इसमें वो भी आए कि वो भी कम से कम ज्यादा यार मैं बात यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि भाई किसी भी मुल्क की आर्मी या मिलिट्री जो भी मुल्क की हिफाजत के लिए सलाह जो भी होते हैं ना पुलिस वाले जो फौज फौज होती है आर्मी होती है उनकी उसे कभी आपने आपने काम नहीं समझना तो उससे उसका कोई पता नहीं है कुछ भी वो कर सकते हैं तो इसीलिए अपने आप को पर काबू पाना है और अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि दुश्मन से भी एक दो नंबर आगे होना चाहिए क्योंकि भाई उसका कोई पता नहीं है कुछ भी कर सकता है तो इसलिए हर मुल्क की आर्मी ऐड होनी चाहिए हम उनको सलूट पेश करते हैं बाकी रमजान भाई आपको कैसी वीडियो सो गाइस जो भी बातें की भाई ने बहुत ही अच्छी की और यार ये भी बात क्लियर और दुरुस्त है कि इंडिया वाकई यार इकोनॉमी के लिहाज से और जो भी इनकी जो मिलिट्री के लिहाज से और ये इनके जो इकोसिस्टम है वो भी अब बेहतर से बेहतर होता जा रहा है क्योंकि अब इधर से तकरीबन 35 से 40% इनके जो ये जंगलात हैं वो बढ़ रहे हैं और इनकी या जो आबो हवा है वो भी साफ हो रही यानी कि क्लियर हो रही है और इनकी जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज की हो या चाहे इनकी जो मिलिट्री पावर हो उनकी जो सेनाई शक्ति हो दूसरे यार इनके जो हथियार वगैरह हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी बहुत ही जदीद से जदीदतर होते जा रहे हैं और इनका एजुकेशन सिस्टम लेवल भी ऊपर जा रहा है और इनकी जो इकोनॉमी है वो भी सबसे ऊपर जा रही है तो वाकई यार इससे इसमें यार ये शक नहीं है कि हम पाकिस्तानी होकर इंडिया की तारीफ कर रहे हैं लेकिन जो सच है वो तो सच ही रहेगा अगर चाहे यार सच को कड़वा होता है लेकिन जब इंसान बोलता है तो सबकी आंखें खुल जाती हैं तो वाकई यार इंडिया बहुत ही वेल एंड गुड है सो भाई आपकी क्या राय है यार वेरी नाइस यार वीडियो देख के मैं तो दंग रह गया यार इंडिया हमसे इतना आगे चला गया हम 70 साल से वो पीछे ही आ रहे हैं पीछे की तरफ ही गामजन है लेकिन आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहे तो इतने हालात बुरे हो रहे हैं कि भाई बस एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में एक दूसरे के भाई भाई का नहीं रहा यहाँ पर ठीक है ना एक दूसरे को खाने के चक्कर में आवाम पड़ी है सही बात है यार सही ये बात नहीं कि यार मैं अपना कारोबार करूंगा तो यार उससे मुझे कुछ ना कुछ हासिल होगा तो दूसरा बंदा वही काम शुरू कर देता है यार इसके में फटा वो अल्लाह के बंदे जब हुक्मरान ही सही नहीं है वो खुद ही खाने को लगे हुए हैं तो ये आवाम क्या करेगी इनको तो भूखे मरने के अलावा और कुछ सोचता भी नहीं है तो भाई अगर इनको कुछ मिलेगा नहीं ये चोर बनेंगे डाकू बनेंगे या डॉक्टर इंजीनियर पैदा होने से रहे तो यहाँ साइंटिस्ट क्या पैदा होंगे यहाँ भूखे नंगे पैदा होंगे सारे
5-10 साल हो गए हैं, 20 साल, किसी को कोई मेरिट पे नौकरी मिली है? नहीं, मेरिट पे नौकरी नहीं मिलती यहाँ, या इतने पढ़े लिखे बेरोजगार फिर रेडियो लगा के बैठे हैं या रिक्शे चला रहे हैं, या एम फिल एम पी एच डी करने वाले वो रिक्शे चला रहे हैं। अल्लाह के बंदे कुछ तो सोचो यार, देख तो लो थोड़ी सी देर। ट्रेनें इनकी देख रही है, इनकी इकॉनमी देख रही है यार, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आपने कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।